Hello my dear students, welcome to the Slate class of Physics A-Levels. In this class, we will continue with the chapter of gravitational field. Right? In this chapter, previously we have seen the formulas of gravitational force, gravitational field strength, gravitational potential and potential energy. So what was the formula of gravitational force? Gravitational force is equal to Gmm over r square, where g is gravitational constant, m is mass, small m is the other mass, and r is a distance between 2 point masses. याद रहे कि gravitational force was always attractive and its SI unit was Newton. It's also a vector quantity, right? The formula of gravitational field strength due to a larger mass was Gm over r square. Then we studied gravitational potential. Its formula was minus Gm over r, and gravitational potential energy, and its formula was minus Gmm over r. Right? You know that gravitational potential energy is always negative in the attractive field. So in this class, we will do change in gravitational potential energy. Right? So you will write a heading, change in gravitational potential energy. Change in gravitational potential energy. राइट तो जब भी एक ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ या अवे फ्रॉम अर्थ मूव करेगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी and you know that whenever the object moves away from earth its height will increase and its gravitational potential energy will also increase, right? For that we have this earth once again as a reference mass. This point is the center of earth, right? This is a larger mass. Let's call this mass capital M. And here is a point. Let's call this point A, and this is point B, right? Now the distance from the center of earth towards point A, this distance is RA, and the distance from center of earth to point B, this distance is RB, right? So let's assume that there is a small mass. मैं यहाँ पर draw करता हूँ. This is a small mass initially placed at point B, right? So this is small m. हमने इसको small m से represent कर दिया. Let's assume that this mass m moves from point B, which is a distant point, to point A. ठीक है? अब इसके केस में height of mass is reducing because it is coming closer to earth. तो जब ये closer to earth आएगा, इसकी gravitational potential energy will decrease, right? तो आप लिखेंगे the change in gravitational potential energy is equal to potential energy at point B, potential energy at point A, which is final potential energy, minus potential energy at point B, which is initial potential. जब भी आपने change in energy find out करना होता है तो आप final minus initial करते हैं, right? So the formula of gravitational potential energy is minus Gmm over r. तो आप पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस Gmm ओवर पॉइंट ए पे आर की क्या वैल्यू है? पॉइंट ए पे आर की वैल्यू है आर ए माइनस, ठीक है? अब यहां पर जो माइनस ये वाला ये फॉर्मूला का माइनस है, माइनस Gmm ओवर आर बी, ठीक है? अब ये दोनों माइनस साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, राइट? सो यू विल फर्दर राइट इट एज Gmm ओवर आर बी माइनस Gmm ओवर आर ए, ठीक है? अब क्योंकि ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा. और याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी के साथ माइनस का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही, वैल्यू इज रिड्यूस, राइट? तो इस स्टेज पे आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई वी कैन नॉट यूज
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg डेल्टा h। ये भी तो फॉर्मूला है ना जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था और A1 में भी पढ़ा था बच्चों। दैट फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड at the points where small g gravitational field strength can be considered as constant। यहां पर ये फॉर्मूला इस वजह से अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B आर डिस्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो G at point A है that is greater than gravitational field strength at point B। जो पॉइंट दूर है, जो पॉइंट B है, वहां पर gravitational field strength weak है। ठीक है, अगर ये दोनों gravitational field strength सेम होती that would have been possible अगर A और point B में डिस्टेंस बहुत लेस होता तो वहां पर आप mg डेल्टा h अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, सो mg डेल्टा h कहां पर अप्लाई कर सकते हैं? यू कैन अप्लाई mg डेल्टा h फॉर स्मॉल हाइट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर g कैन बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर स्मॉल चेंज इन हाइट, for small change in height which is delta h, show that change in gravitational potential energy can be given by the formula mg delta h। ठीक है, इसका मतलब है आप प्रूव कर सकते हैं कि change in potential energy is equal to mg delta h। For that let's assume that this is earth once again। मैंने आपके सामने अर्थ दोबारा से प्लेस की है एंड देयर इज अ स्मॉल मास प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सो दिस इज अ स्मॉल मास एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जब आप इस स्मॉल मास को होल्ड करके लिफ्ट करेंगे और इसकी हाइट इंक्रीज करेंगे एंड यू विल ब्रिंग इट अप टू अ पॉइंट वेयर इट्स हाइट इज डेल्टा एच and you are considering that this change in height या increase in height is very small। ठीक है, okay, this is center of earth। The object was initially present at point A which is at the surface of earth, at point B which is at height from the earth। तो मैं यहां पर कुछ distances mark करता हूं। This point C marks the center of earth, right? This marks position A and this marks position B, right? अच्छा, now few distances। ये वाला distance देखिए from the center of earth to point A, this distance or this height is RA। ठीक है, अच्छा, this distance from the center of earth to point B, this distance is RB। At this distance between point A and point B, this distance is delta h। This distance is delta h। अब आप बच्चों ये देखिएगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर मूव किया है। आपने ऑब्जेक्ट को मूव किया है फ्रॉम A to B। सो बेसिकली आपने ऑब्जेक्ट को रेज किया है। You have raised the object और इस डायरेक्शन में gravitational potential energy is also going to increase। Gravitational potential energy will also increase। अच्छा, now you must know that this change in height can be represented by the difference of two distances which is RB minus RA। ठीक है, और हमने ये भी assume किया है कि this change in height is very very small। ये इतनी स्मॉल है that distance RA is approximately equal to distance RB which is equal to R, right? And this R is radius of earth। This R is radius of earth, right? Now the radius of earth is approximately 6400,000 meters। तो उसके सामने few meters की कोई significance नहीं है। few meters तक we can consider that G is constant, right? So अगर आपने इस केस में change in potential energy find out करनी है, that can be given by the formula final potential energy which is at point B minus initial potential energy which is potential energy at point A, right? So final potential energy is minus G m
over RB, ठीक है, माइनस GMM over RA, right? Now you know further कि minus into minus can be replaced by plus sign, तो ये GMM over RA plus sign के साथ आप इसको पहले भी लिख सकते हैं. So you will further write it as GMM over RA minus GMM over RB, right? Okay, in both of these expressions GMM and GMM is constant, so you can take it as common, right? तो जब आप इसको common लेंगे, so this can be further written as GMM times 1 over RA minus 1 over RB, right? Now solve this fraction with me. You will further write it as GMM, and the common LCM is product of RA and RB. न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? You will write RB minus RA. Now, what is the difference of RB and RA? बच्चों, आपने स्टार्ट में लिखा था RB minus RA can be represented by this delta H sign. So, RB minus RA can be represented by delta H, right? Further, you wrote that RA is approximately equal to RB, and both of them are equal to the radius of Earth because delta H is negligible. So further you will write GMM, the difference of RB minus RA is delta H divided by RA, और RB दोनों किसके इक्वल हैं? R के, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल. सो आप इसको रिप्लेस करेंगे R स्क्वायर्स. मैं इसी क्वेश्चन को रीअरेंज कर रहा हूं और थोड़ी सी रीअरेंजमेंट के बाद मैं लिख रहा हूं GM over R square multiply by M multiply by delta H. Now you know that the formula of gravitational field strength is GM over R square, right? So GM over R square can be replaced by a single variable, which is gravitational field strength, right? You will write gravitational field strength multiply by mass multiply by change in height. This formula can be rearranged to mg delta H. तो बच्चों, इतनी लेंथी डेरिवेशन है, but you can prove for the small heights change in potential energy can be given by mg delta H, where g is constant and it is only constant for very small distances, right? Now next up we will study the concept of escape velocity. This is very important concept, escape velocity. Right? Now what is escape velocity? बच्चों, escape velocity के नाम से क्या लगता है आपको? आपको नाम से क्या आइडिया आपके माइंड में आता है? बच्चों, escape velocity से आपके माइंड में ये आइडिया आता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को अगर आपने एस्केप करना है, अगर आपने लीव करना है, तो एक ऑब्जेक्ट को एट द सरफेस ऑफ अर्थ किस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे सो दैट इट लीव्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. सो हियर यू हैव अर्थ वंस अगेन, राइट? सो अर्थ का जो आप मास कंसिडर कर रहे हैं, द मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M, एंड हियर यू हैव अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, right? So this is an object at the surface of earth. So escape velocity का मतलब ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट स्मॉल m को अर्थ की सरफेस से किस वेलोसिटी से लॉन्च करें या किस वेलोसिटी से थ्रो करें such that it goes to infinity, right? So this velocity जिससे आप इसको थ्रो करें, that minimum velocity at which it is launched and it reaches this large distance so that it escapes the gravitational field of Earth, we refer this distance as infinity. ठीक है? ओके, आप मुझे ये बताइए कि infinity पे what is the value of gravitational potential energy? At infinity, the value of gravitational potential energy is always zero, and that is the maximum value of gravitational potential energy. We know from the previous classes. ठीक है? और इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू है? इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GM M over R.
तो इस पॉइंट पर तो वैल्यू माइनस में है, वेयर आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू दिस पॉइंट. लेट मी मार्क दिस डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस आर. तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो जब आप ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दिस डायरेक्शन विल इंक्रीज. और किस एनर्जी के एक्सपेंस पे इंक्रीज होगी? डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस पे होगी. तो आपने जब इसको एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च किया तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी. दूर जाते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी या डिक्रीज होगी, राइट? सो यू कैन से कि इधर जाते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? वंस अगेन, एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी at which object is launched from the surface of planet so that it reaches infinity, right? So आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट से अगर आपने ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. आई एम राइटिंग गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, इंक्रीज होगी, वी कैन यूज पॉजिटिव साइन विद इट. सो what is the formula of kinetic energy? Kinetic energy is equal to half mv square, and this is being converted into gain, which is represented by plus sign, in potential energy, which is gmm over r, right? So next step क्या होगा? mass से cancel out हो जाएगा, mass से cancel out हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि escape velocity object का mass के ऊपर depend नहीं करती. Escape velocity does not depend upon the mass of an object. So out of this formula, let's make this velocity v subject of the formula, right? So escape velocity v is coming out to be 2gm over r whole under root, right? This is the formula of escape velocity of any planet. याद रहे कि हर planet की escape velocity की value different होती है, ठीक है? So what is the escape velocity of Earth? देखिए, Earth का जो mass है, mass of Earth is 6 multiplied by 10 raised to power 24 kg, and radius of Earth is approximately 6400 kilometers. ठीक है? तो आप इस equation में यहां पर mass of Earth और यहां पर radius of Earth substitute करें. Let's try to find out escape velocity for Earth. So आप लिख रहे हैं for Earth escape velocity is equal to under root of 2gm over r, right? 2 multiplied by gravitational constant, which is 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11. Mass of Earth is 6 multiplied by 10 raised to power 24 divided by radius of Earth, which is 6400 kilometers, and you need to convert it in SI unit. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 raised to power 3 से, ताकि इन मीटर्स में कन्वर्ट हो जाए whole under root. So let's find out the value of escape velocity by substituting these values in the calculator, right? So 2 multiplied by 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11 multiplied by 6 multiplied by 10 raised to power 24 divided by 6400 multiplied by 10 raised to power 3. So this value is coming out to be approximately 11183 meters per second, because the SI unit of distance is meters per second. राइट? अच्छा, अगर मैंने स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर सेकंड में, तो मैं फर्दर किससे डिवाइड करूंगा? मैं इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करूंगा, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 11.18 या 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड. ठीक है, मैंने जो आंसर लिखा है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर है, राइट? सो द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर्स पर
सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करवाना है, यू नीड टू लॉन्च इट विद वेलोसिटी ऑफ 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, विच इज अ लार्ज वेलोसिटी। ठीक है, जनरली ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट को इतनी हाई स्पीड से थ्रो किया जाए कि वो 11.2 किलोमीटर कवर करे एवरी सेकेंड। हाँ, अगर आप इसको ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, इट मे एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। याद रहे कि इस वेलोसिटी के अंदर आपने एटमॉस्फेरिक लॉसेज या फ्रिक्शनल लॉसेज को कंसिडर नहीं किया। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। सो एवरी प्लैनेट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट होगी, मून की एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट होगी। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। You will get to know the value is exactly 11.2 kilometers per second. So in this class, we studied the formula of change in gravitational potential energy. We also studied how for the small heights we can use the formula mg delta h, and we have seen the concept of escape velocity. Now the next classes are going to be very interesting because in that we will study the concept of satellites, time period of satellites, types of satellites, and energies of satellites. We will also see the concept of weightlessness. So stay tuned and do subscribe Slate. Thank you.